फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शफाली अग्रवाल। मैंने अपने पहली वीडियो में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी के बारे में बताया। आज मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द फिंगर जॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। इट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ प्राइमरी जनरलाइज्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड इज मोस्ट कॉमन इन द मिडिल एज्ड वुमेन with the development of gelatinous cyst or the bony outgrowth. Now friends, if it affects the distal interphalangeal joint यानी कि आगे वाले जोड़ों को अफेक्ट करता है, we call it a Heberden's node. If it affects the proximal interphalangeal joint यानी कि पीछे वाले जोड़ों को अफेक्ट करता है, we call it a Boucher's node. And sometimes it affects the first joint of the thumb. We call it a metacarpal joint of the thumb. इस तरह की नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री जरूर मिलती है, यानी कि जिस पेशेंट को इस तरीके की कोई बीमारी है उसकी फैमिली में किसी न किसी को इस तरीके के सिम्टम्स और पेन रहा होगा। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दीज नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस? तो बिसाइड द विजिबल बम्प्स जो आपको दिखाई देंगे, पेन इज द करेक्टरिस्टिक सिम्टम। इट यूजली गेट्स वर्स विद वर्क एंड ईजेज विद दी रेस्ट, यानी कि जैसे जैसे आप काम करोगे पेन बढ़ता जाएगा, आप आराम करोगे आपके दर्द में आराम मिलेगा। नाउ दिस पेन यूजली गेट्स वर्स विद टाइम एंड चेंजेस इनटू अ शार्प कटिंग पेन्स एंड इट चेंजेस इनटू द स्टिफनेस, यानी कि आपके उंगलियों में इतनी स्टिफनेस आ जाएगी कि you can't be able to close or open your fingers properly. एक swelling आपको दिखाई देगी जोड़ों के अराउंड, एक टेंडरनेस यानी कि छूने पे आपको दर्द होगा। Now what are the homeopathic medicines for these nodal osteoarthritis? तो दोस्तों, before going to the medicine, I would prescribe some home medicines, home remedies that you can do to increase the flexibility of your joint and eases the pain of your arthritis. So these exercises can be just bend your finger, bend your thumb, make an O. With the help of ball, move and back forth the ball from the palm to the tip of your finger. Squeeze that ball so that a grip can be maintained. Lift the fingers from the table. Now these are some exercises that you can do easily at home. Besides these exercises, you can also do the hot and cold therapy at home. Now what are the homeopathic medicines that we give in these cases of nodal osteoarthritis? The first medicine comes the Midorrhinum. In this, enlarged and puffy joints are present around the joint, and this medicine is usually given in 1 amp potency. It should be taken before going to bed at an interval of 15 days. Second medicine comes the Colophylum. It is given in 13 potency. It generally affects the small joint and it is given thrice or 4 times a day. The third medicine is Lithium Ka, where the rheumatic nodes are present around the joint and the pain and the swelling is relieved by putting your fingers in hot water. So beside these medicines, we also give ginseng Q. It is given in tincture form and it is taken 20 drops in water thrice a day. Just like ginseng Q, ammonium phos and calcarea fluor are the medicine that should be taken by every patient, and it is given in 3x or 6x potency. So please subscribe my channel. I'll be back with my more videos on the diseases and their homeopathic treatment.